अभी now what we will do, like if we want to create a chart, ठीक है, and if we are having a data and if we want to create a chart, then how we'll be able to do that? Okay, first of all, suppose we are having this, I am having a table, that is this one. Okay, ये मेरे पास टेबल है, ठीक है, और मुझे इस तरह का चार्ट बनाना है। यहाँ पे ये दिख रहा है? यस सर। ओके, सो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम चार्ट बनाएंगे। एंड देन एंड हाउ वी विल मेक दिस इनटू द VBA coding, that we will look into it. Okay, so I have already written a code, just a second. ये हमारा कोड है, ओके, एंड I'll just go through with this one by one. Okay, so now if you see, चार्ट है अपना, वर्कबुक है, वर्कशीट है, दिस ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स. So that also object that is called shape. The chart is also called a shape. ठीक है, तो अब shape में कैसा है, like suppose if you see here, first of all we have declared my chart. कोई भी नाम देना है भाई, my chart. I'll say chart as a not right chart, क्योंकि chart तो एक properties और method में आ जाएगा. That's why I have written my chart as a shape. Shape क्या हुआ अपना? Object. ठीक है. यस। वर्कबुक क्या हुआ अपना? ऑब्जेक्ट. और ये अपना ई रो ई कॉल एज ए इंटीजर, ठीक है, मतलब मैंने खाली एंड रो और एंड कॉलम. और ये OWB वर्कबुक, दैट इज आल्सो आवर ऑब्जेक्ट. तो यू नो कि हम जब भी व्हेनेवर वी डिक्लेयर द वेरिएबल वी नीड टू सेट द ऑब्जेक्ट, करेक्ट? जब भी हम ये डिक्लेयर करते हैं ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, this is our object, and this is our object, 3 objects. So whenever there is an object, we need to set that object. So first we will set the object like workbook. मैंने खाली लिखा है, ये मैंने जो डिक्लेयर किया है यहाँ पे WB, I'll set the WB, okay, and I'll ask to open workbook from this path. Okay, I'll say, I'll just copy paste our path. We'll go over here and I'll just copy this path and I'll paste over it. ये पाथ मैंने पेस्ट किया कि भाई एक काम करना, यहाँ पे जाके ये वाली फाइल निकालना. कौन सी फाइल? बैच 1 में है ना. फाइल नंबर अपने, फाइल नंबर कौन सी है यहाँ पे? फाइल नंबर clusterbar.xlsx, वो ओपन करेगा. ठीक है, मैं क्या बोला मैंने यहाँ पे कि भाई वर्कबुक एज अ वर्कबुक है, एंड देन आई एम सेटिंग द वर्कबुक, that workbook dot open, and this is the path. This until this it's a path and this is the file name clusterbar.xls. ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो जाके ओपन करेगा, and then we need to add one more workbook. Okay, for that we need to write down set now be, that is workbook dot add. If you suppose, if you have here declare the variable my chart as a shape, okay, here declare none NONWB as a workbook. So we have to also set the object that this object is workbook dot add, that means नया फाइल ओपन करना है. ठीक है, उसके बाद what we have said WB, I'll say in a WB dot sheet new dot activate. अगर मैं देखूंगा WB तो WB मेरा कौन सा होगा, जो फाइल मैं ओपन करूंगा यहाँ पे. ठीक है, let's go with this. अपने पहले स्टार्ट करेंगे. ठीक है, यहाँ पे हो गया. अब ये क्या बोला है, इस पाथ पे अगर मैं देखूंगा बैच 1 पे क्लस्टर बार कौन सा फाइल नेम है, यहाँ पे अगर हम जाएंगे, ये दिख रहा है क्लस्टर बार है, बराबर है. यस। अब मुझे ये ओपन करना है. ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ पहले. ये रहा अपना क्लस्टर बार, ये क्लोज. अब मैं यहाँ पे ओपन करूंगा. ठीक है, ये वाला ओपन होगा. इफ यू सी, अपने पास अभी एक ही फाइल ओपन है,
ये मैंने बात किया, ओपन हो गया ये, ठीक है। एंड देन द न्यू Yes. वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, it has been open. Now if you see, this is our macro, this is the WB and this is now WB, okay, and WB, that is new workbook. Yes. अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, WB जो अपना सेट किया हुआ है, दैट्स मीन ये वाला। अभी कौन से सीट पे अपने क्लस्टर बार चार्ट एंड इधर न्यू है, तो मैंने उसको बोला कि भाई न्यू पे एक्टिवेट करो उसको। अब देखो इट हैज बीन एक्टिवेटेड, ओके। नाउ आई विल सिलेक्ट द ई रो। ई रो कैसे सिलेक्ट करेंगे, रेंज जो भी होगा एंड ऑफ जो तो पता है आपको, एंड xlf डॉट रो एंड देन वी विल फाइंड ई कॉलम। तो एंड रो एंड ई कॉलम फाइंड किया हमने, और now here we are creating the range, that's mean we are giving the name to that range, how exactly it happens, okay. So if you see cell 1 comma 1 dot address, cell 1 comma 1 dot address, we always need to go like this, cell 1 comma 1 dot address। तो यहाँ हुआ ये हमारा पहला स्टार्ट, ठीक है। और मुझे कहाँ जाना है, ई रो 6 ई कॉल, तो ये क्या है, सेल मतलब रो नंबर कौन सा है, 6, और कॉलम नंबर भी 6, दैट्स मीन 6,6। तो 1,1 से लेके 6,6, तो ये 1,1 से हुआ, उसमें मेरा 6th रो, ठीक है, और मेरा ये 6th कॉलम, तो मेरा ये रेंज हो गया। समझ आया ये? Yes, sir. ओके, तो ये मेरा रेंज हुआ। तो मैंने उसको बोला भाई एक रेंज ये बना। अब देखोगे ये रेंज का नाम क्या है, A1 से 5 6 आया, A1 से 5 6 बराबर। अब मैंने उनको क्या बोला कि भाई एक काम कर, ये जो रेंज है ना इसको कॉपी कर दे। अब मैंने जो नया वर्कबुक ओपन किया है ना, यहाँ वाला ये पूरा नया, वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसने जाके उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, आ गया अपने पास डेटा, कॉपी पेस्ट नए वर्कबुक में, ठीक है। Yes. अभी मैं उसको बोल रहा हूँ कि अब कॉलम ऑटो फिट कर दो, यहाँ पे कॉलम ऑटो फिट कर देगा नए वाले में, हो गया ऑटो फिट। नाउ व्हाट, now we have declared that my chart as a shape, so we need to set the objective, that is my chart as a shape, ठीक है, सेट करना है मेरे को। तो अभी ये क्या लिखा है, सेट माय चार्ट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू ऑन न्यू वर्कबुक शीट 1 प्लीज ऐड शेप डॉट शेप ऐड चार्ट। सो ये सिंटेक्स है जो आपको मेमोराइज करना होगा। मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि क्या करना है चार्ट के लिए, क्या करना है, तो उसको मेरे को मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक काम कर, इस वर्कबुक में शीट नंबर 1 पे डॉट शेप डॉट ऐड चार्ट, वहां पे जाके एक चार्ट ऐड कर, ठीक है। तो वहां पे जो भी चार्ट वो होगा वो ऐड करेगा यहाँ पे, ठीक है। द चार्ट हैज बीन एडेड, ठीक है। अभी जब चार्ट ऐड हुआ ना, उसने रेंज लेके चार्ट ऐड किया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई उसका जो सेट सोर्स डेटा है ना, वो रेंज 2 है, A1 से A5 6। अभी जो दिख रहा है ना यहाँ पे, अभी दिख रहा है रेंज चेंज होगा उसका। So if you see here, the range is getting changed, and now I want that it should be into the 3D column. ये मेरा चार्ट का टाइप है, जैसे ये पाई चार्ट है, ऐसे मैंने बोला भाई 3D column. If you see, now it is in 3D column, बराबर, क्योंकि ये मेरे चार्ट का टाइप है ऐसा, भाई ऐसा बनाओ, ठीक है। अगर तुमको कुछ और भी बनाना हो तो यू कैन जस्ट राइट डाउन एक्सेल, आई विल से 3D कॉलम ना, मैं कुछ और देखता हूँ, यू विल गेट एनीथिंग, कॉलम क्लस्टर, आई विल गो अबाउट, एंड देन इफ यू से जस्ट आप देखो, आप आप है ना कोड को समझो, कोड क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे मैंने सेट किया माय चार्ट। माय चार्ट मतलब मैंने उसको बोला कि भाई माय चार्ट मतलब क्या, कि इस वर्कबुक में इस शीट पे एक चार्ट ऐड कर दो, वो माय चार्ट। अब माय चार्ट हो गया, तो यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ये रेफरेंस करेगा माय चार्ट डॉट चार्ट, उसका सेट सोर्स करेंगे। कभी भी हम चार्ट जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमको रेंज सिलेक्ट करना पड़ता है ना, डेटा। तो वो डेटा हमने ये बोला कि भाई इस वाले वर्कबुक में इस शीट में ये जो रेंज है ना, ये डेटा लेना है आपको। और मैं अब यहाँ पे मैं वही कॉपी पेस्ट कर दूंगा कि भाई एक काम कर, इसको कॉलम क्लस्टर बना। अब देखो यहाँ पे कॉलम क्लस्टर चेंज हो गया वो ग्राफ, समझे। सो इट्स वर्क Yes. लाइक दिस, एंड नाउ आई वांट
कि जो मेरा नया वर्कबुक है दैट सपोज टू बी सेव ऑन द पाथ हियर एंड I'll save this, I'll give this path. Okay, and then I'll remove this with the name of, I'll have written output chart. ठीक है, तो आउटपुट चार्ट के नाम पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बैच 1 में कहीं भी आपको आउटपुट चार्ट दिख रहा है? आउटपुट चार्ट नहीं दिख रहा है ना? नहीं। ना, अभी हम सेव करेंगे ना जब, ये आउटपुट चार्ट आपको दिखेगा. If you see here it is output chart. Where it is? Here it is. रिकॉर्ड के ऊपर। इसको ओपन करेंगे, अपना आ गया बराबर. यस। अभी ये वाला जो है ना, ये आपको मैं मैक्रो दूंगा, वो आप चेक कर लेना कि ये किस तरह से ये रन होता है. ठीक है, नाउ वी विल मूव विद द यूजर फॉर्म. ठीक है, यूजर फॉर्म, ये जो यूजर फॉर्म होता है, whenever we need to create an application, here the user form comes. I'll say ये ओपन कैसे किया है सर यूजर फॉर्म? देखो यहाँ पे क्या करने का, जैसे अपने मॉडल नहीं ओपन करते, यहाँ पे जाते हैं मॉडल पे तो इंसर्ट का ऑप्शन आता है ना. हाँ 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 यस। तो इंसर्ट में क्या करना है, मॉडल इंसर्ट करना है या यूजर फॉर्म? मैंने बोला भाई यूजर फॉर्म करना है. ठीक है, गॉट इट। तो अभी अपने जाएंगे यूजर फॉर्म करने. ये मेरा यूजर फॉर्म है. ठीक है, एंड इसमें जस्ट ओके, तो इसमें ये मेरा यूजर फॉर्म है और यूजर फॉर्म में मुझे ये मेरा कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड टूल बॉक्स. ओके, सो इन द टूल बॉक्स विच बटन डू यू वांट टू यूज? ठीक है, I'll say here it is select object, this will not say, I'll say label. ये label बटन है. Label is like then you need to create a label like this. Okay, ये मेरा label है. 2 मिनट भाई, हाँ 2 मिनट. हेलो. यस सर। हाँ यशवंत. सो अभी ये जो हमने किया ये दैट इज कॉल्ड लेबल. लेबल इज लाइक सपोज व्हेनेवर यू वांट टू जस्ट गिव द नेम, और जैसे मेरे को यहाँ पे ना चेंज करना है, तो ये कैप्शन दिख रहा है, कैप्शन में यू नीड टू गो एंड यू विल चेंज. यस सर। आपको जो भी उस लेबल का नाम देना हो तो यू कैन गिव, आई विल से यशवंत. इफ यू सी वहां पे जो है नाम चेंज हो जाएगा एंड दैट इज यशवंत. ओके, so here you are giving the name to that label. Okay, the same thing if I want to create a text box, this मेरा text box है. ठीक है, text box में क्या होता है, suppose whatever you want to write in the application, an application opens. अभी पता है कभी होता है लॉगिन मांगता है, फिर पासवर्ड मांगता है, एंड देन आपको लिखने को बोलता है वो, करेक्ट? तो वहां पे Yes. हमको ये सब मेंशन करना रहता है. सो दिस डिटेल स्टोर इनटू द टेक्स्ट बॉक्स. ओके, सो व्हाट एवर यू वांट टू स्टोर in like in form of string, in form of path, in form of anything, you can store into the text box. ठीक है, and the third one is I'll go with the command button. Here if you see, this is my command button. कमांड बटन क्या होता है वो पता ही है ना अपने को, अपने लोग वो रन करते हैं जब मैक्रो, तो वो अपने Yes. राइट करते हैं, तो इसको डबल क्लिक करने का.
Whenever we click the double click, we get the like whatever what you want to do in that what you want to do. I'll say into the command button. First, I'll go and create this. Here it is text box. I'll say in the caption. I'll write down as a 1. Okay. Now, if you see the value as of now, it's a 1. Okay. And here whatever you want to, like suppose if you want to do a changes, you can do the changes. Suppose I want font, whatever font you want, I'll say in this size number, the size, font size and all has been changed. Okay. And now this is my command button. If you see, I have just created for you, like I have just created for your example. So अभी ये जो कमांड बटन है ना, ये मेरा क्या है, इधर इसका नाम क्या है, लेवल 1. ठीक है. And this command button I'll say, I'll write down as a caption. I'll say add, and this would be subtract. ठीक है. This is add and this is subtract. अब मैं उसको जाके what I want to do, I'll just remove this as of now. I'll let you know this tomorrow. Okay. So what I want कि जब मैं subtract करूं तो वो कम हो, and जब मैं add करूं तो वो ज्यादा हो. ठीक है. So I'll go into the add option. I'll just write. This is my command button. मैं just write करूंगा. मैं क्या लिखूंगा कि भाई user form क्या है अपना 2 है डॉट लेबल 1 डॉट कैप्शन इक्वल टू जो भी होगा मेरे को क्या करना है भाई, इक्वल टू +1. तो जब भी मैं ऐड, ये दिख रहा है समझ में क्या है, यूजर फॉर्म डॉट लेबल 1, लेबल मतलब उसका नाम था जो लेबल. करेक्ट. ये अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखोगे यूजर फॉर्म हुआ अपना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरा लेबल हुआ. ठीक है. इसका नाम क्या है, लेबल 1. ठीक है. और ये यूजर फॉर्म का नाम क्या है, यूजर फॉर्म 2. ठीक है. तो मैंने वहाँ पे क्या लिखा, अब यहाँ पे लिखा मैंने यूजर फॉर्म 2, मतलब यूजर फॉर्म 2 का लेवल 1 का कैप्शन क्या होना चाहिए, तो यूजर फॉर्म 2 लेवल 1 कैप्शन +1. एंड सेम वे if I have my in the minus, user form minus caption -1. ठीक है. Yes. Let's see whether it is working or not. तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो दिख रहा है, will say play. If you see, if you press add, it will get added into the button. ठीक है. 8, 9, 10, 11. And if you do subtract, it will get minus. The button is working. Correct. I want to add this. Yes. I want to subtract this. So this is the button. Okay, this is the user form. I'll say I will change the user form. Let's see. I want to change the user form name. If you see, I'll say test. Okay. Here I'll go. In the caption where it is. Okay, now it is test. I'll just keep down.
So by this you will be able to perform whatever you want. So if you suppose this is the title, अपने ने change किया, यहाँ we can insert the image as well. Suppose if you go over here, you just need to like explore it from your end. If you don't do it, you will not be able to got it. ठीक है. अब यहाँ पे जैसे ये पिक्चर आया, what picture you want to say? I want to add anything else, like suppose यहाँ पे पिक्चर, कोई भी पिक्चर हो ना तो अपने वहाँ पे रख सकते हैं. तो ये पीछे जो आता है वो इमेज आ गया उसमें, समझ में आया? So we have inserted the Yes. image and whatever we wants to do, we can do. So today we have completed the label and the command button. Tomorrow I'll start with the rest of the button, how exactly it is and how it will be. So image, command button, and it's completed. We will continue with the rest of the day. Okay. Yes. Okay, then let me add in. Hello. Yes, Parikshit. Yeah, actually it's already like I was just about to end the call and it's already been like two calls, many of them has not joined, so I was just about to close the call, and I just wanted to let you know that from tomorrow it's are you like today you have joined the call, so have you gone through with the recording files? Okay, sir. No, have you gone through the recording files? You are getting anything with that? Sorry. Yashwant, I am not talking to you, I am talking to Shreyas. Hello. Yes, No, Shreyas. sir, I haven't. But I joined because today I was on sick leave. And I Okay. saw the message now, so I just wanted to join. Yeah, it's okay. I was just about to like close the call and I was not even getting like something like, that's why like nobody has joined. That's why I was just waiting because there are many today I need to complete this user form and there were some who were absent and I wanted to complete this. So it's okay. If it's possible for you join tomorrow, it's okay. Else I'll just record it and share on the path. In case if you have an issue, I'll just schedule the doubt class as well. So do practice from your end because until this week all the courses will get completed. So in Yes, case sir. if anyone have any doubt, we can schedule whenever you gets the time, you just do the practice and on the base of that just select one day on the base of, and on that day we'll resolve the issue. Okay. Okay. Okay, then Yashwant and Jennifer, share. That's all for today. We will Okay. connect tomorrow with the same user form. Yeah, okay, sir. Okay. And in case if you have any doubt, Yeah. just let me know without any hesitation. Okay. Okay, sure. Yeah. Bye bye. Take care. Bye. Bye. Take care. Thank you. Bye, sir. Bye.